हॅलो एव्हरीवन. सो आज आपण बघणार आहोत की डेलमध्ये आपण काय नवीन शिकू शकतो. आता मी युनिट 4चं आय एम पी क्वेश्चन्स करतोय. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक सोपा आय एम पी क्वेश्चन आहे की इथे तो क्वेश्चन होता ड्रॉ द स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल and ASM chart for a 2-bit binary counter having one enable line E, such as E is equal to 1, counting enabled, and E is equal to 0, काउंटिंग डिसेबल्ड. हा प्रश्न 2023च्या पेपरमध्ये आला आहे. येस, 2023च्या पेपरमध्ये हा प्रश्न आला आहे 6 मार्कांसाठी. आता हा जो प्रश्न आहे तो ॲक्च्युली गुगल जेमिनायकडनं आपण बनवून घेतला आहे एक डायनामिक लॅबमधून. तर आपल्याला ह्याचं एक पूर्णतः इंटरॅक्टिव्ह ग्राफिकल इंटरफेस मिळाला आहे, जिथे आपण हे शिकू शकतो की ही प्रोसेस ॲक्च्युअल कशी असते किंवा त्याचे स्टेट डायग्राम इथे कसे असतात, नक्की काय होतं त्या स्टेट डायग्राममध्ये आपण इथे पाहू शकतो. आता जसं की आपण बघतोय की जे 2 बिट बाइनरी काउंटर है ज्याला अपन ई इनपुट देते हैं. मैं तो हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 बिट बाइनरी काउंटर दिया गया है जो कि बाइनरी नंबर्स को काउंट करता है और उसे हमने इनपुट दिए हैं ई. तो अभी जो 2 बिट का बाइनरी काउंटर होता है जो जिसमें हमें ई दिया है, इनेबल का लाइन दिया है, उसमें 4 प्रकार के स्टेट्स होते हैं, जैसे कि 00, 01, 10 एंड 11, जो हम के मैप में भी लिखते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पर ई इज इक्वल टू 1 मतलब ई इज इक्वल टू 1 मतलब अगर ई उसका ऑन होगा तो काउंटर जो है इंक्रीमेंट होगा हर एक क्लॉक के पल्स के ऊपर. मतलब अगर वो अभी 00 पर है और अगर ई इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आ गई तो वो इंक्रीमेंट होगा अगली वैल्यू पर जो कि है 01 की. अगर फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो वो हो जाएगा 10 को, उसके बाद वो जाएगा 11 को. अगर ई 0 हुआ तो काउंटर होल्ड करेगा वो करंट वैल्यू. मतलब अगर ये 00 है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. मतलब अगर 00 पे ई 0 हो गया तो उसका स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा. जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा. चलिए अभी समझते हैं कि ये जो चीज़ है वो हम एक्चुअल में कैसे सीख पाएंगे. देखिए, अभी यहाँ पर एक बिट 1 दिया है जिसका हम 00 बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग हमारा 00 से हो रहा है. अभी मैं इसको शुरू करता हूँ. अगर मैंने अभी 00 पे स्टार्ट कर दिया इसको, देखिए 00 पे जो काउंटिंग उसका इनेबल कर दिया, क्लॉक पल्स अगर मैंने दे दिया तो 01 पे हमारा जो है जा रहा है नेक्स्ट स्टेट को. मतलब यहाँ पर हमें e इज इक्वल टू 1 मिला है तो इसीलिए यहाँ पर रेड लाइट आया है. e इज इक्वल टू अगर 1 मिला तो वो इंक्रीमेंट हो रहा है और अगले नंबर पे जा रहा है जो कि है 10 पे. फिर से वो इंक्रीमेंट हुआ, पहला बिट वो जा रहा है 11 पे. अब दोनों बिट इंक्रीमेंट हुए तो वो जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे. मतलब 11 अगर इंक्रीमेंट हुआ, दोनों के ई अगर 1 हो गए तो जो नेक्स्ट पल्स होगा वो इंक्रीमेंट होगा. मतलब अगर 11 पे हमें इंक्रीमेंट मिला तो वो 00 पे जाएगा. अगर 00 पे इंक्रीमेंट हुआ तो वो 01 पे जाएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. फिर 01 का ये हो गया, मतलब 0 और 1 तो 1 है, ई इज इक्वल टू 1 तो ई 1 होगा तो अगली स्टेट पर जाएगा. अभी फिर से 10 मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है और अगर दो दो 1 है तो भी इंक्रीमेंट हो रहा है. इसका स्टेट टेबल अगर हम देखेंगे यहाँ पर Q1 और Q0 देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा 4 0 4 1 है, 2 0 2 1 2 0 2 1. उसके बाद में 0 1 0 1 0 1 ऐसा लिखना है. अगर जो ई उसका अगर 0 रहेगा तो नेक्स्ट स्टेट में भी 0 और 0 ही आएगा. ई अगर 1 हो गया तो इंक्रीमेंट होगा 00 का, 01 पे चला जाएगा. उसके बाद में अगर 0 आता है तो
जो स्टेट है वो उसी स्टेट पर रहता है। मतलब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग देख सकते हैं 0 0 पे ये स्टेट है, और यहाँ पर अभी E1 आ चुका है, तो वो इंक्रीमेंट होगा, 0 1 पे चला जाएगा। उसके बाद में 0 1 पे हमारा ये जो ई है वो 1 है, तो 1 0 0 1 का 1 0 पे चला जाएगा। उसके बाद में हमारा जो ई है वो 1 आया है, तो 1 0 का 1 1 पे चला जाएगा। और 1 1 का जो है हमारा E1 आया है, वो भी इंक्रीमेंट होगा, वो फिर से 0 0 के स्टेट में चला जाएगा। अभी यहाँ पर हम ASM का चार्ट देखेंगे, जो कि आखिरी होगा। ठीक है, अगर हम 0 0 की स्टेट पर है, तो ये ई का जो है वो जा रहा है आगे, देखिए ऐसा। फिर अगर फिर से हम लोग कर रहे हैं, तो वो S1 का ए जाएगा। उसके बाद फिर से अगर हम करेंगे, वो S2 पे जाएगा। फिर से हम करेंगे, वो S3 पे जाएगा। इसे हम कहेंगे 2 बिट बाइनरी काउंटर यूजिंग ई एज अ इनपुट। यही था हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब अभी हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यही कहीं होगा। ओह ये यही है। देखिए, अ, ये आ सकता है, ड्रॉ ASM चार्ट फॉर 2 बिट अप काउंटर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल मेथड फॉर 6 मार्क्स। तो हमें यहाँ पर आके फॉर 6 मार्क्स ऐसे लिखना है। उसके बाद में हम लोग डायनामिक व्यू लैब्स में उसको सबमिट करेंगे। अब थोड़ी देर रुकने के बाद हमें ऑटोमेटिकली एक इंटरैक्टिव इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तब तक मैं देखता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब का स्ट्रीम है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलिए, यहाँ पर ASM चार्ट एंड मक्स कंट्रोलर डिज़ाइन मेथड जो है वो आ चुका है। अभी हम समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे होती है और हमें कैसे करनी चाहिए। यहाँ पर एक चार्ट एंड मक्स कंट्रोलर डिज़ाइन मेथड जो है, अभी हम समझेंगे। AI का सही इस्तेमाल करना इसी को कहते हैं, जिससे हम अपने काम को कम टाइम में कर सकें। तो ये हमें आना चाहिए हर किसी को। ठीक है, चलिए। इनपुट ई है। चलिए, जब तक ये होता है तब तक हम लोग थोड़ा सा यूनिट 6 के ऊपर आँख डाल के देखते हैं कि यूनिट 6 क्या है। नमस्कार। सो यूनिट 6 एक सो यूनिट 6
A microprocessor is a programmable digital integrated circuit which acts as a CPU of computer of system. It can perform arithmetic, logical, control, and data processing operations according to the instructions stored in the memory. Microprocessor systems mainly consist of microprocessor, memory unit, input-output devices, and system buses. Memory organization plays an important role in operation of microprocessor. The memory is divided into two parts, ROM and RAM. ROM is a permanent memory, whereas RAM is a temporary memory. Each memory location has a unique address. The address bus selects memory location, decides the type of operation such as read and write, etc. The communication is carried between microprocessor, memory, input-output devices is carried out using system buses. There are three types of system buses in a microprocessor. First is address bus, data bus, and control bus. So the address bus, it is a unidirectional carriers an address of memory or input-output devices. Data bus is a bidirectional and transfers data between different units. Control bus is carries the control and timing signals such as read and write timings. Initially, microprocessors is divided into several functional units, ALU, which performs addition, subtraction, and logical operation like AND, OR, XOR, decoding, and generating control signals. The control unit controls overall operation by fetching instruction from memory for data, address and intermediate results. Program counters to saves address of next instruction. The register holds the current instruction. An important component used in the digital system is ALU IC 74181. It is a 4-bit arithmetic logic unit. It can perform 16 arithmetic and 16 logical operations. Input to IC are A0 to A3 and B0 to B3, while control input are S0 to S3 and mode input M outputs are F0 to F3. Arithmetic operations are implemented using ALU and shift registers. 4-bit multiplexer works on shift add principle where partial products are generated and shifted to the get a product. Due to this, microprocessors are widely used in computers, embedded systems, and industrial control systems, communication system, and consumer electronic, etc. This was a recap of Unit 6. Now let's focus on the ASM chart and mux controller design for 2-bit synchronous up counter. So we have got a problem statement here. So draw the ASM chart and design a 2-bit synchronous up counter with an enable input using multiplexer controller method. So last time we did with the only yeah, we got only for the ASM chart for the 2-bit binary counter. So now it is using the multiplexer controller method. So nothing else, same method, but like before, just one or two things get added here. So just let's take an overview of those things. Again, we have four states 0 0 0 1 1 0 1 1. We have components like two flip-flop, state register, two muxes, and uncontroller. So a mux select lines driven by present state. Exactly. So step 2 and 3, we have to write state table and mux inputs here. So how will you do this? State Q1 and will be consisting of 0 0 0 1 1 0 1 1, which will be 0 0 will be S0 S1 S2 S3. Next will be 0 0 0 1 1 0 1 1. Next E is equal to 0 will be same. Then the E is equal to 1. When 0 0 it should be 0 1. When because it's incrementing. Okay, we saw in this state, when it's 0 0, when we clock it, it gets next transitions to the next state. So it becomes S1. So
When it's 0 0, it becomes 0 1. Now it's 0 1 over here, it becomes 1 0 like this. Okay, now when it's 1 0, it becomes 1 1, and when it's 1 1, it again becomes 0 0. So in the mux 1 input, so we have given here 0, then it again gets to 1. Why? Because it's 1 0, so the e is equal to 1, so it's incremented. Okay, for each state row, determine we have to what logic function of e produces the next. For example, right now, look at this S1, and Q1 goes to 0 to 0. Okay, we have to look. Q1 goes to from 0, e is equal to 0 to e is equal to 1. Means we are going from present state is equal to current state. Sorry, present state is equal to next state to the incremental state. Means when here we have it 0 0, input we have 0, here it gets increment. When here we get increment, then again we get the present state. Now we get 1, so it gets again incremented. Now we get incremented, again it's get incremented. Okay, so that is the state diagram. Now we can just uh, likely understand this using such diagrams. Why not using when 1, then we get q0 only. So it is that easy. This was only in the unit 4. Now for unit 4 again, Boolean function using PAL, we have to study one thing, that is how to write the K-map and how to make those equations, how to do that diagram and all. I'm checking. Okay, so we can do that thing again, but right now we have to learn these things. So again, let's go here. So teach how to okay, nice. Now we have given him a stipulated time. Now let us just look over what are the easy questions in the unit 5, so we can, you know, we can explain the working of TTL and gate, explain the circuit diagram of CMOS inverter. So define these things. Again, we have the TTL and CMOS logic over here. Advantage of open collector output. Then we have the logic family. Again, I talked about the third one for before only. I wanna I wanna ask him what's the role of how we can solve this unit 3 questions such as converting of flip flops and things. So let's just test those things also. Um, convert following flip flops. Okay, let's just give an screenshot to it. Screenshot, solve this and teach also.
Okay, so it is giving, it will teach us. Thus we have to wait. Okay, so it's done right now. Now we have to learn it. So the mission is to implement the Boolean functions using an PAL programmable array logic device. We have been given two functions which are having certain numbers inside them. The F1 is here 3, 6, 7, 11, 12, 13, and F2 is like 0, 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13. We have to draw two K-maps for each function. Now, in the first function, let's draw this. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 of them. So we like AB and CD. CD will be this. Okay, this will be C, this will be D, C, this will be C, this will be D. Okay, and this will be A, B, A, B, A, B, A, B. Okay, now what we have to do is we have to name these things. Like the three, there's a three, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sorry, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sorry, 12, 13, 12, 13, 14, 15. Okay, we have this. So now we have to name it like from this, it's A bar CD, A bar CD plus A bar BC. Same is for here. We have to write the simplified expression and then just fuse map with it, like how what we are using here. Like for this F1, 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 F1 to A bar, B bar, C bar, D bar. Now here we are using first A, C, D. So A bar, then C bar, then D bar. Now we are using what? Then again we are using A bar for F1, then B, and what we are using C bar. Again we are using A, B, and C. Okay. Now for F1 we are using here B bar, C bar, and D bar. Okay. Now for the F2 we are using C and the D. Now we are for using A and C, we are using A and C. Now for B bar and C bar, we are using B bar and C bar. Just attach it to the F of U. It will be an AND gate. Array logic, so it will be an AND gate here. Just we have to fuse it, and it's done. Just check how many components we made, and slash we get our full marks. Now we have to only learn how to find the simplified expressions. Now let us learn the flip-flop conversion. So here it's a very simple thing to know. Everyone should know it as it is very simple to learn. Also, it's like very cool.
Nothing is difficult in this cycle, and everyone should learn it. Now, our goal is to make an SR flip flop behave like a JK flip flop. So, we need to find the logic for the input as an R, as an R in set and reset log in terms of J and K and the current state, which is named as Q&A over here. The processes write a truth table of the target, determine the required excitation for each transition we get, and use K-maps to simplify the expressions. Okay, the convergent table we will be getting is DJNK. Okay, the Qn means the current state. The Qn state plus 1 means current plus n state. S and R, we have to find this required. Okay, J and K will be like similar. 4041, 2021, 2021, 101, 11, 101. Then for 0, for the state of 0, it remains 0. If it becomes 1, it becomes 1. If it becomes 0, then 0, then 1, then 0. Why 1 then 0? Because it's moved to the, because it's 0, 1. 0, 1, when Q1 1 is 1, the excitation, it gets incremented ahead. It's 0 again, then 0. Then 0 is now not implemented, but it's the next state again indirectly. It gets 1, 1, 1, 1, 1. This was only the stream. We'll meet next time. Thank you for being with me.